So in question number 115, the figures of two algae. Here we just see one, and it's there. The second one is there. So we have to just tell whether they are fucus and polysiphonia, or dictyota and polysiphonia, or dictyota and porphyra, and the fourth option is porphyra and polysiphonia. तो ये जो दो फिगर दिए हैं एल्गी के, तो हमको ये बताना है कि इसमें जो है ये क्या है, ठीक है। इनके जो ऑप्शंस हैं फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया, डिक्टियोटा पॉलीसाइफोनिया, डिक्टियोटा पोरफायरा और पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज डिक्टियोटा एंड पॉलीसाइफोनिया। तो द करेक्ट आंसर इज डिक्टियोटा and polysiphonia, ठीक है। तो first of all let's notice that the first alga has got the branched structure, and it is the frond. You can just notice the branched ribbon-like structures, and that just makes the frond. The frond of dictyota is highly branched. Furthermore, you may just notice the brown color of the frond on the upper part, that is contributed by the pigment fucoxanthin, and this frond has got a stipe at the lower side. This stipe is a stalk-like structure, okay, and at the base, even while it has not been properly just shown, but there is a hold fast that fixes the plant to the substratum. So this is the structure of Dictyota thallus. So we can also just notice the tiny air bubbles on the front, and the conceptacles, etc., that just contain the sex organs. So here it is a Dictyota, and it is a brown alga. This A, Dictyota, is a brown alga. Brown due to the pigment fucoxanthin, a type of xanthophil. It is a special type of xanthophil. Xanthophil, okay. So this just imparts a brown color, and the second figure is that of polysiphonia, a red alga. So this you can just notice the filamentous body, highly branched, and it is red in color. So polysiphonia is a red alga. It's red color, given by
R phycoerythrin. Phycobilin. Phycobilin, and it is marked by highly dissected filamentous body, as we can just see in the figure, and its red color is there that enables it to just absorb the bluer side of the wavelength, most diffracted wavelengths, and the wavelength that is available at the deepest of the waters. So this is why it is a deep water alga. Okay, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दो फिगर, जिसमें डिक्टियोटा जो है ये एक ब्राउन एल्गा है, इसका ब्राउन जो कलर है तो ये फ्यूकोजैंथिन की वजह से आता है। फ्यूकोजैंथिन एक खास तरह का जो क्लोरोफिल है, सॉरी जैंथोफिल है, ठीक है, और ये ब्राउनिश कलर जो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं, ये काफ़ी ब्रांच्ड है, ठीक है। और उसके ठीक नीचे देयर इज अ स्टाइप नाम का जो है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके नीचे जो है होल्ड फास्ट है, जो कि इसमें पूरी तरह से नहीं दिखलाया गया है, लेकिन होल्ड फास्ट वो स्ट्रक्चर है जो इसको सबस्ट्रेटम से बेस से जो वो फिक्स करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ब्राउन सारे ब्राउन एल्गी जो मरीन होते हैं। पॉलीसाइफोनिया जो है इसको हम देख सकते हैं कि ये रेड कलर का है, ठीक है। इसका जो बॉडी है वो हाईली फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है, ठीक है। और इसका जो रेड कलर है तो ये आर फाइकोएरिथ्रिन नाम के एक रेड पिगमेंट की वजह से आता है, जो दरअसल एक फाइकोबिलिन। There are three classes of photosynthetic pigments: chlorophyll, carotenoids, that includes the carotene and xanthophyll, and the third category is the phycobilin, which includes the R-phycoerythrin, C-phycoerythrin found in the cyanobacteria, and R-phycocyanin, C-phycocyanin, and the third category that is found only in the cyanobacteria is the L-phycocyanin. तो यहाँ पर जो है ना ये R-phycoerythrin जो है तो ये इसको जो है वो रेड कलर इम्पार्ट करता है, और इसको काफ़ी डीप वाटर में जो है ये रहने में मदद करता है, काफ़ी डीप वाटर में सर्वाइव करने में मदद करता है, क्योंकि ब्लू साइड का जो वेवलेंथ है उसको ये इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट होता है, और डीप वाटर में जो है यही वेवलेंथ जो वो पहुंच पाता है सनलाइट का, ठीक है। सो दीज आर डीप वाटर एल्गी. So let's now just move over to the next question. There's all the three types: isogamy, anisogamy, and oogamy are found in which of the following? First of all, let's have a look at the three types of the gamete formation, gamete forms. In isogamy, the gametes are all alike. They are completely identical to each other, and the two gametes just fuse to form the zygote. In anisogamy, there is some difference in between the gametes. There are basically two groups of gametes. One gamete is smaller. It is more active. It is formed in much more in number. And the other type of gamete is larger. It stores some food. It is less active. It is less motile. And it is formed less in number. So it is called anisogamy. In oogamy, the two gametes are completely different from each other. One gamete that is referred to as the male gamete is very small. It is highly active. It contains negligible amount of food, and it is formed in enormous number, in a very huge number. On the other hand, the other gamete that we refer as the female gamete are that the egg is completely sessile. It doesn't have any locomotive organ like flagella, etc. It is laden with a lot of food. It is formed very less in number and usually singly. Okay, so its
function is to sustain the development of the zygote, development of the plant from the zygote, as long as the favorable condition doesn't come. Okay, so here the oogamy is there. So in isogamy, gametes are all alike. In anisogamy, uh, one type is smaller, more numerous, and more motile. Motile means moving. With less amount of food. The third type is anisogamy. One more. The other type is larger comparatively, less numerous, and less motile, each with more food. The third type, that is the oogamy, has a very numerous, very motile, male gamete, which are with least amount of food, usually referred to as the sperm. The other type is very less in number, usually single, completely sessile, sessile means not motile. With
enormous food. This is the female gamete. Referred to as ovum or egg. So now let's see that which of the following has got all the three types of gamete formation. So in this case, the correct answer is Chlamydomonas. D. Chlamydomonas is the correct answer. So it's different species have got all the three types of the conditions: isogamy, anisogamy, and oogamy. Okay, so I'm just writing the name of the three species of Chlamydomonas. So isogamy, found in Chlamydomonas longiastigma. Anisogamy, found in Chlamydomonas brownie, BRAUNII, and oogamy is found in Chlamydomonas coxifera. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन कंडीशंस जो वो पाए जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। आइसोगैमी, जहाँ पे सारे गैमेट्स हैं वो एक जैसे हों, बिल्कुल उनमें कोई डिफरेंस ना हो। एनिसोगैमी, जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस वो पाया जाता है गैमेट्स के बीच में। एक जो टाइप है गैमेट का वो छोटा होता है, वो ज़्यादा नंबर में बनता है, मोर न्यूमरस होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा मोटाइल होता है, ठीक है, और उसके पास कम फूड होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली, वो ज़्यादा नंबर में बनता है, कम नंबर में बनता है, कम मोटाइल होता है, और उसके पास ज़्यादा फूड जो है वो स्टोर होता है। ओगैमी वो कंडीशन है जिसमें कि एक गैमीट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूमरस होता है, काफ़ी मोटाइल होता है, और उसको मेल गैमीट कहते हैं। उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फूड होता है, ठीक है, और उसको हम स्पर्म के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टाइप का गैमीट है वो बहुत कम नंबर में बनता है, अक्सर सिंगल बनता है, एक बनता है, वो बिल्कुल ही ससाइल होता है, उसमें कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है, कोई भी सीलिया फ्लैजिला कुछ नहीं पाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फूड जो जमा होता है और वो स्पर्म का वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं, जिसको अक्सर ओवम या एग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना डिवीजन, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, दैट वन गैमीट इज डिजाइंड to perform the function of sustenance of the development of zygote into plant. Even in the unfavorable condition, it just keeps the zygote alive. And the other gamete just simply finds out the ovum and it just delivers the genetic material. ठीक है, तो ये एक डिवीजन ऑफ लेबर है, ये श्रम विभाजन है कि एक गैमीट का काम होता है कि काफी फूड इकट्ठा करके वो ये इंश्योर करे कि जाइगोट जो वो बड़ी भली भांति प्लांट बन जाए, ठीक है। और इसके अलावा वो अगर अनफेवरेबल भी कंडीशन है तो जाइगोट जो है उसमें भी जिंदा रहे, फेवरेबल कंडीशन का वेट करे, और दूसरा जो गैमीट है यानी स्पर्म, तो वो ढेर सारी संख्या बन करके जो है वो ओवम को फाइंड आउट कर ले, खोज ले, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर कर ले,
ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, ये तीनों ही कंडीशन जो है क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि आइसोगैमी जो है ये क्लेमाइडोमोनास लॉन्गिस्टिग्मा नाम का जो है स्पीशीज में पाया जाता है। एंसोगैमी जो है वो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी नाम के स्पीशीज में पाया जाता है। और ऊगैमी जो है, ऊगैमी इज फाउंड, ये जो है ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी इज अ स्टार्च, ग्लाइकोजन, शुगर, फैट। ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल जो है ना ग्रीन एल्गी जो है, तो उसका एक सही जो आंसर है वो है स्टार्च। तो ये स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ग्लाइकोजन जो है ये फूड मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, फंजाई का, ये स्टोरेज फूड है। शुगर जो है वो स्टोरेज मटेरियल नहीं है, रिजर्व फूड नहीं है। ठीक है। शुगर जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डाउन करता है, ये वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए इसको रिजर्व फूड के तौर पे नहीं रखा जाता है। और फैट जो है तो ये भी जो है वो ग्रीन एल्गी में जो है नहीं के बराबर पाया जाता है रिजर्व फूड के फॉर्म में। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च इज द करेक्ट आंसर of this question because the green algae just keep their reserve food in the form of starch. Glycogen is found in fungi and bacteria. Sugar is osmotically active, and this is why it is not just kept in the form of the reserve material, because it will just lower down the osmotic potential and water potential of the cell. And the fat is also negligibly just found in green algae as a reserve food. So here the correct answer is starch. So let's now just move over to the next question, that is laminaria. Question number 118. Laminaria and fucus belong to Phaeophyceae, Chlorophyceae, Rhodophyceae, and Cyanophyceae. The correct answer is the Phaeophyceae. Both of them are brown algae. They are marine. Their body is brown due to presence of the pigment fucoxanthin, as I have just already mentioned that fucoxanthin is the special xanthophyll, a special carotenoid that is found in the body of the brown algae, and they just impart the brown color to the body of the brown algae. So laminaria and fucus both are the members of the class Phaeophyceae of algae. Okay. So let's now just move over to the next question. The plant amphibians are, the options are bryophytes, angiosperms, pteridophytes, gymnosperms. The correct answer is the bryophytes. It is the correct answer. Plant amphibians. First of all, amphibians are those organisms that can just live in the two forms of habitat, one water, the other land. In fact, among the plants, bryophytes are found in the damp and moist places, and they represent the transitional state in which the plant is just trying to set its foot on the land from water. The aquatic plant is now just trying to establish itself on the land. So this transitional state is represented by the bryophytes, and this is why bryophytes are called the plant amphibians. ठीक है। ब्रायोफाइट्स को जो प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियंस जो है वो कैटेगरी है लिविंग बींग्स की, जो कि दो तरह के हैबिटेट्स में जो वो पाए जाते हैं, एक जो वो वाटर, दूसरा लैंड। ठीक है। और ब्रायोफाइट्स जो है ना वो उस चेंजिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि प्लांट जो है वो वाटर से अपने कदम को जमीन पे रख रहा है, वो अपने आप को जमीन पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो इस लिहाजे जो है जो ब्रायोफाइट्स हैं तो उनको जो है प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट जो है वो हमेशा वेट यानी नम जगहों पे ग्रो करते हैं, वो मॉइस्ट जगहों पे, नम जगहों पे, डैम प्लेसेस पे जो वो ग्रो करते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से जो है प्लांट एम्फीबियंस
are the bryophytes. So bryophytes are referred to as the plant amphibians. Very important question with regard to the examinations like NEET. But it can also be asked in your board examination. So let's now just move over to the next question. What is true about mosses? First, I would like to just mention that mosses are the bryophytes. They are the advanced bryophytes. Okay. So which is true about mosses? Dominant and independent sporophytes. Archegonia produce many eggs each. Antherdioids require water for fertilization. Gemmi are unicelled structure. The correct option is C. That is, antherdioids require water for fertilization. Okay. So first of all, let's see the different options. The option A says that there's a dominant and independent sporophyte. It is completely wrong. The sporophyte is completely dependent upon the gametophyte. If I just draw a figure of a moss, these are rhizoids, and it is the leafy gametophyte that is also referred to as the gametophore. So it is the gametophyte, and on this gametophyte there arises a sporophyte, the foot of which is embedded in the tissue of the gametophyte. There is a long seta, and subsequently there is a capsule here. There is a capsule. So it is the gametophyte. And it is a leafy gametophyte with an axis, and these are rhizoids that we can just see here. This is the sporophyte. It is the seta. That just keeps the capsule elevated in the air, and there's the foot, the lowest part, embedded in the gametophytic tissue. So this forms the sporophyte, and as we can just see in this figure, the sporophyte is completely dependent upon the gametophyte, and it is the gametophyte that is a dominant. It is the dominant independent form. Independent structure. Phage. Okay. So a sporophyte is dependent, not independent, and it is the secondary. It is a less dominant phage. So first option is wrong. Archegonium produces a single egg. They do not produce the many eggs, so option B is also wrong. And Archegonium, this is a structure of an Archegonium, and this Archegonium has got a single egg here, and it is the ventral canal cell. These are the neck canal cells. It is the neck. It is the venter. Okay. So a single cell, a single egg
a single ovum is present in an archegonium? Archegonium. Gemmi are absent in moss. Gemmi are found in Markansia, and they are multicellular structures. So here, anthrazoids require water for fertilization. Anthrazoids are the sperms of bryophytes, including mosses. So they are such a structure, and they are biflagellate, and they just require water to swim through when there rains. So with a splash of water through the film of water, they just move, and in this way they finally just reach the archegonium present on the archegonial branch. Okay, so option C is correct. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मॉसेस हैं, जो थोड़े एडवांस्ड किस्म हैं ब्रायोफाइट्स के, तो उनमें स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाता है। जैसा हम देख सकते हैं इस फिगर में कि स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट के ऊपर फिक्स्ड है, और ये जो स्पोरोफाइट है तो ये गैमेटोफाइट पे लगा हुआ है। गैमेटोफाइट जो है, जो हैप्लॉइड फेज है, तो यही जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, और स्पोरोफाइट इसके ऊपर न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन जो गलत है। दूसरी बात कि आर्किगोनिया तो इनमें सिंगल ओवम पाया जाता है, जैसा हमने इस फिगर में दिखलाया है। तो ये ओवम है, उसके ऊपर वेंट्रल कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। उस पर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है कि एंथ्राजोइड्स वो पानी रिक्वायर करते हैं, उनको वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो फिगर हमने बनाया है, तो दिस इज एन एंथ्राजोइड। ये एक एंथ्राजोइड है, एक स्पर्म है, और ये गैमेटोफाइट जो है ये डोमिनेंट स्टेज है। तो क्वाइट नेचुरली कि ऑप्शन ए जो वो गलत है। यहाँ हमने जो फिगर बनाया है आर्किगोनियम का, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक सिंगल एग इज प्रेजेंट, अ सिंगल ओवम जो वो प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो ये भी गलत है। लेकिन एंथ्राजोइड जो है तो वो पानी रिक्वायर करते हैं, ये वाटर रिक्वायर करते हैं। जब बारिश होती है तो उसके स्प्लैश के साथ जो है वो उड़ते हैं, वो जाते हैं तो द आर्किगोनियल ब्रांच, जहाँ पर आर्किगोनियम के अंदर ओवम उनका वेट करता है, और वो जो है पानी के फिल्म के थ्रू, पानी के पतले वो लेयर के थ्रू वो तैरते हैं, और तैर करके जो है आर्किगोनियम के ओपनिंग तक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, और डी जो है वो गलत है, इसलिए क्योंकि जेमी जो है तो वो मार्केंशिया में पाए जाते हैं, वो मॉस में नहीं पाए जाते हैं। जेमी जो वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, जो कि जब गिरते हैं तो नए प्लांट्स पर वो पैदा करते हैं। ठीक है, तो here let's now just move over to the next question. Question number 121. The male gametes of bryophytes are multiflagellated, uniflagellated, non-motile, biflagellated. ठीक है, यानी कि उनके मेल गैमेट में, उनके एंथ्राजोइड में कई सारे फ्लैजिला होते हैं, एक ही फ्लैजिलम होता है, वो बिल्कुल फ्लैजिलम उनमें नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन जो वो कहता है कि उनमें दो फ्लैजिला होते हैं। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज डी। द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जैसा हमने अभी पिछले फिगर में जो है वो पिछले क्वेश्चन में फिगर जो बनाया है, तो यू कैन जस्ट नोटिस हियर दैट दीज आर द टू फ्लैजिला। ये दो जो है ये फ्लैजिला हैं। ठीक है, और इन फ्लैजिला के हेल्प से जो है वो पानी के सरफेस पे, जो पानी पे जो वो तैर सकता है, पानी में तैर सकता है। तो दीज आर द फ्लैजिला। ठीक है, पेयर ऑफ फ्लैजिला, ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लेट्स नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन that rhizoids are found in bryophytes, pteridophytes, fungi, both A and B. The correct answer is D. Both
A and B. So first of all, let's see that bryophytes have rhizoids for both anchorage and absorption of water and minerals from the soil. So all the bryophytes have got the rhizoids for this purpose. So this rhizoid may just look like this. I'm just drawing the figure of the liverworts like Rixia. So they are just found here on the undersurface, or if I just draw an outline of their vertical transfer section, so they are found here. So these are rhizoids, and it is the thallus. The thallus. So this is thallus. तो यहाँ पे rhizoids are there. अब हम pteridophytes की बात करें तो ferns have got prothallus. The gametophytes of the ferns are called prothallus. Are called prothallus. So prothallus have some resemblance with the thallus of the liverworts. So they are heart-shaped structure like this. And on the undersurface of the prothallus, there are rhizoids which anchors it to the ground and absorbs water and mineral. So prothallus of the ferns are self-dependent. They are green in color, and they just contain the archegonia and antheridia in the archegonial and antheridial chamber on the undersurface. So rhizoids are also present on the undersurface of a prothallus. It is the prothallus, and it is the lower surface. It is the undersurface of the prothallus. So we can just see that the rhizoids are also present in pteridophyte prothallus. Okay. On the other hand, in the heterosporic species of pteridophytes, the gametophyte is endosporic, and therefore they don't have much rhizoids. So here, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं तो उनके अंडर सरफेस पे अगर मान लो लिवरवर्ट है तो उनके अंडर सरफेस पे जो है rhizoids पाए जाते हैं. अभी हमने उस फिगर को देखा, मॉस वाले फिगर को देखा कि यहाँ पे एट द बेस ऑफ द मॉस के बेस पे जो है rhizoids हैं जो उसको फिक्स करते हैं ग्राउंड पे, वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है.
और लीवर वर्ड्स में जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द राइजोइड्स आर फाउंड, राइजोइड जो है वो निचले सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। टेरोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, फर्न्स जो है एक एडवांस्ड टाइप ऑफ टेरोफाइट्स, तो उनमें फर्न्स में जो गैमेटोफाइट्स हैं उनको हम प्रोथैलस कहते हैं, वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर होते हैं और उनके निचले सरफेस पे जो है राइजोइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो राइजोइड्स हैं ये वही काम करते हैं, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोथैलस को एंकर करते हैं, उसको फिक्स करते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। प्रोथैलस वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके। तो इस तरह से राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन बोथ ब्रायोफाइट्स एज ऑल्सो इन टेरोफाइट्स। So the correct answer is D. D जो सही आंसर है both A and B. Okay. So let's now just move over to the next question. That is, which of the following statement is incorrect regarding bryophytes? They are dependent on water for sexual reproduction. It is actually a correct statement. The main plant body is diploid. It is incorrect. This statement is incorrect. The main plant body is a haploid, it is a gametophyte. Let's just see some other statements as well. They usually occur in damp, humid and shady localities. It is correct. They play an important role in plant succession on bare rocks. It is also just correct. So this statement is correct. First statement is correct, that they are dependent on water for sexual reproduction, because the male gametes can approach the female gamete just swimming through water with the help of flagella. They have got the judeogamy, that is the sperm has to just swim its way to the female gamete. Statement C is also correct. The bryophytes are found in the humid, shady localities. So it is also correct. They play an important role in plant succession on bare rocks. That is it is also correct. Plant succession means the succession of one group of plant community by another plant community on some virgin habitat, on some habitat where no previous plant life is there. So in that case, the plant succession on bare rock, that is called the xerozoa. The bryophyte play an important role, and this is why this statement is correct. The statement that the main plant body is incorrect, is diploid, is incorrect, because the main plant body of bryophytes is the haploid gametophyte. Is the haploid gametophytes. तो क्वाइट नेचुरली अगर हम इन चारों स्टेटमेंट पर नजर डालें तो पहला स्टेटमेंट जो सही है, क्योंकि स्पर्म्स उनके जो है ब्रायोफाइट्स के जो एंथेजोइड्स हैं, तो उनको वाटर जो वो चाहिए ताकि उसमें वो तैर करके जा सकें अपने फ्लैजिला के हेल्प से, ठीक है। ये प्रोसेस जिसको हम कहते हैं जूडियोगैमी। दूसरा जो स्टेटमेंट है तो ये इनकरेक्ट है। द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, न कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो नम जगहों पे, वो छायादार जगहों पे जो वो पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर द प्लांट एम्फीबियंस। तो ये स्टेटमेंट सही है। और प्लांट सक्सेशन, जहाँ पर कि एक प्लांट कम्युनिटी दूसरे प्लांट कम्युनिटी को रिप्लेस करती है, और वो तब तक रिप्लेस करती है जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश ना हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मॉस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ब्रायोफाइट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो दे जस्ट रिप्लेस द लाइकेन एंड पेव द वे फॉर द हर्ब्स। तो वो जो है लाइकेन को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे वो आते हैं, और उसके बाद जो है फिर
उनके जाने के बाद हर्ब्स जो आता है, और धीरे धीरे जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के का जो फॉर्मेशन है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो फॉरेस्ट है, तो उसके जो वो आगमन में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। Let's now just move over to question number 124. During fertilization in ferns, male gamete reaches the female gamete through the agency of course, water is the correct answer. Insect is absent. Chemicals are absent. Wind is absent. यहाँ पर हम ये बता दें तुमको कि वाटर जो है ये एक मेन मीडियम है जिसके थ्रू स्पर्म जो वो उनके जो एंथेरोइड हैं तो वो तैर करके जाते हैं फ्रॉम द एंथ्रीडियम टू आर्किगोनियम, जहाँ पर फीमेल गैमीट ओवम उनका वेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर water just plays the main role in the process of reproduction in pteridophytes as well. So it is because the antherdioids, biflagellate or multiflagellate antherdioids just swim their way through a film of water to the archegonium for fertilization. So the water is a must. Since antherdioids are completely dependent upon water, so this is why in order to complete the life cycle, the pteridophytes also require water, even while they are the first fully successful land plants. But water is needed. The chemicals play the role only when the antherdioid just get very close to archegonium. So it is the sugar, it is the malic acid, it is the fumaric acid that function as a chemoattractant towards which the antherdioids get attracted and finally they get into the archegonium. But the main role is played by water. So the correct answer is water. तो यहाँ पे water जो वो एक सही आंसर है, क्योंकि इवन हालांकि टेरोफाइट्स जो हैं तो वो लैंड प्लांट्स के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, वो एक सफल जो वो लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी वाटर की जरूरत उनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पड़ती ही है, क्योंकि उनके जो एंथेरोइड्स हैं, उनके जो स्पर्म है, तो वो वाटर में तैर करके, पानी में वो तैर करके जाते हैं और तैर करके जो वो आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं और वहां पर फिर वो ओवम के साथ जो है वो ओवम को वो फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर इज द करेक्ट आंसर, वाटर जो एक सही आंसर है। ठीक है, तो विंड जो है ये गलत है, ये रॉन्ग है। केमिकल्स जो हैं तो ये बहुत जब पास जाते हैं एंथेरोइड आर्किगोनियम को तब जाकर वो कीमोअट्रैक्टेंट का काम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज केमिकल्स जो हैं तो वो मेन रोल प्ले नहीं करते हैं। इंसेक्ट्स का कोई रोल ही नहीं है फर्टिलाइजेशन में, तो इस तरह से वाटर इज द मेन आंसर। So let's now just switch over to the next video for more questions. Let's now see question number 125. Prothallus is A. Gametophyte, monoecious, autotrophic, present in pteridophytes like ferns. This statement is correct. Actually, at the very first answer, we just hit the correct option. So Prothallus, as I just draw the figure of a prothallus, it is a heart-shaped structure with the rhizoids on the undersurface and the archegonial and antheridial chambers on the lower side. So a prothallus is the gametophyte. Prothallus is a gametophyte of the ferns developed exosporically, means the germination occurs
showing a germ tube outside the spore, and the overall prothallus, a wing-like thin structure, develops outside the spore, and it is a heart-shaped structure with rhizoids on the undersurface. So it is a gametophyte. It is monoecious. Monoecious means both archegonia and antheridium. Both the male and female sex organs are present on the same prothallus. They are autotrophic. They are actually green in color, and they perform their photosynthesis. Therefore, they are autotrophic. So they are present in the pteridophytes like ferns. So this is the correct answer. तो प्रोथैलस जो है एक गैम्प्रोफाइट होता है फर्न्स का, जो स्पोर के बाहर डेवलप करता है. इसको हम कहते हैं एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट. ये मोनोसस होता है, यानी कि आर्किगोनिया और एंथेरिया दोनों ही सेम प्रोथैलस पर पाए जाते हैं. साथ में ये ग्रीन होता है, ये अपना फूड खुद बनाता है. ठीक है, तो इसलिए द आंसर 1 इटसेल्फ इज करेक्ट. ठीक है, पहला ही जो आंसर है वो सही है. बाकी जो है दूसरे में जो है गैम्प्रोफाइट, मोनोसस, ऑटोट्रॉफ प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, ये गलत है. ब्रायोफाइट में जो है वो नहीं पाया जाता है. इट इज नॉट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स. गैम्प्रोफाइट, डायोसस इज रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज प्रोथैलस इज मोनोसस. डायोसस में क्या होना चाहिए था कि दो तरह के जो है वो प्रोथेलाई होने चाहिए थे, मेल एंड फीमेल, और तब जो है उन पे अलग अलग जो है एक पे आर्किगोनिया, एक पे एंथेरिडियम पाया जाना चाहिए था. द प्रोथैलस in order to become dioecious must be male and female protheli, and they must be bearing the male and female sex organ. So this is not the case found in the pteridophytes. So ये गलत है, it is completely wrong. And sporophyte dioecious, again it is wrong. Sporophyte is not it is not a sporophyte, first of all, and neither it is dioecious nor is it heterotroph. So it, and nor is it found in bryophyte. So the fourth option D is outrightly wrong. तो यहाँ पे जो है ना चौथा बिल्कुल जो है वो गलत है. ना स्पोरोफाइट है, ना डायोसिस है, ना हेटरोट्रॉफ है, ना ही ये ब्रायोफाइट में पाया जाता है. So let's next move now to the next question. The question number 126. Heterosporous pteridophyte is Lycopodium, Nephrolepis, Selaginella, Equisita. So here the correct answer is Selaginella. Selaginella is the correct answer. Lycopodium is a lycopsid, but it is a homosporous. These three, this, these, and these. So these are homosporous. Means they produce the same type of spores. They just produce one type of spores. On the other hand, Selaginella is heterosporous, and it just produces the two types of gamete. Heterosporous means producing two types of gametes. Sorry, two types of spores. A small microspores and the larger megaspores. A small microspores which produce male gametophyte bearing antheridia, and large megaspores just which produce the female gametophyte. That bear the female sex organ archegonia. तो हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है कि दो तरह के स्पोर्स का प्रोडक्शन करने वाला. एक जो छोटे स्पोर्स जिनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं,
जो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनके ऊपर एंथीडिया जैसे जो है मेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं, और दूसरे जो है वो थोड़े बड़े जो मेगा स्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं, जिनके ऊपर जो है वो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं आर्किगोनिया, तो वो जो है वो लगते हैं। तो ये खासियत जो वो पाई जाती है सिलेजनेला में, एंड दिस इज एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स द सीड हैबिट। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अब देखें 127। Pteridophytes are also called vascular amphibians of plant kingdom, first tracheophytes, botanical snakes, all of these. So the correct answer is all of these. Vascular amphibians जो है वो इसलिए कहते हैं because they still require water for reproduction. Plant kingdom जो है, तो plant kingdom में जो है ना, ये जो है वो पहले ऐसे plants हैं who had established themselves upon the land but still require water for reproduction. Secondly, they have got the vascular elements like xylem and phloem. So this is why they are called the vascular amphibians. तो इसीलिए उनको जो है vascular amphibian कहते हैं, क्योंकि उनके पास xylem और phloem दोनों होता है। So vascular pteridophytes are the first plants to have established on the land, but despite that they require water for fertilization, since they have got the xylem and phloem, the conducting elements. So this is why they are called the vascular amphibians. They are the first plants to have developed xylem and phloem. So this is why they are also known as the first tracheophytes. Tracheophytes means vascular plants. This is why the pteridophytes are also called the vascular cryptogams. So this is also correct. The third is the botanical snakes. They are also called the botanical snakes because they are found successfully on land, and even while they have just enhanced their length, but they have still not undergone the secondary growth, and this is why they have not just thickened themselves. So this is why they are also called the botanical snakes, and this is why the correct option is D, all the three. So let's now just move over to the next question, 128. So in this question, the statement is, in pteridophytes like ferns, spores germinate to give rise to prothallus, protonema, leafy stage, strobili. So the correct answer is prothallus. As we know that the spores, the ferns are commonly homosporous. And spores germinate exosporically, means outside the spore, the germination and further development takes place outside the spore. Into an independent gametophyte called prothallus. The heart-shaped structure that we have just seen earlier, bearing rhizoids and Anthridia and Archegonia. So this prothallus is the correct answer. Protonema is a leafy stage that is found in the mosses. This leafy stage is also found in the mosses. Strobili are the characteristic feature of the non-ferns like Selaginella, Lycopodium, as also Equisetum. So the correct answer is प्रोथैलस। तो फर्न जो है वो होमोस्पोरस होते हैं, वो एक जैसे स्पोर पैदा करते हैं, और उनके जो स्पोर हैं तो वो जो है उनका जो जर्मिनेशन होता है तो वो स्पोर के बाहर वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोथैलस। प्रोटोनिमा
एक स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर जो स्पोर इमीडिएटली प्रोड्यूस करते हैं वो मॉस में पाए जाते हैं जो ब्रायोफाइट होते हैं। लीफी स्टेज जो है उसी का एक एडवांस स्टेज जो है लीफी स्टेज है, वो भी मॉसी में पाया जाता है। और एस्ट्रोबिली जो वो कोन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कुछ नॉन फर्न जो टेरोफाइट्स हैं जैसे सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विजिटम, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? प्रोथैलस। So let's now just switch over to the next question. There's a question number 129. In Selaginella, the embryo develops into gametophyte, sporophyte, archegonium, and theridium. The correct answer is sporophyte. B is the correct answer. So we know, as I have just drawn the life cycle of those plants that have got the alternation of generation. So I have just shown that the embryo is a diploid structure. It develops from the zygote, and subsequently the embryo develops into the sporophyte, whether it is an independent sporophyte, as in case of the pterophytes like Selaginella, or dependent sporophyte, as in case of bryophytes. So Selaginella is the pterophyte and it has got the independent sporophyte. So embryo just develops into the sporophyte with the help of mitosis. Okay, so here embryo just develops into the independent sporophyte. Sporophytes just produce the sporangia in the sporophylls on the strobilus. So two types are there, male and female. They're the micro and mega. They just produce the respective sporangia. So here microsporangia and megasporangia. Microsporangia just produce the microspore. Megasporangia produces the megaspore. Microspores just produce the male gametophyte. And megaspore produces the female gametophyte. So here one thing noteworthy is that both microspore and megaspores are produced by meiosis, and therefore they are haploid. And here male gametophyte just produces a antheridium, antheridia. Female gametophyte bears archegonia. Antheridia produce antherzoids. Archegonia produces the ovum. Fertilization occurs. Fertilization syngamy occurs, and this gives rise to zygote. Zygote soon forms an embryo, and this embryo develops into a sporophyte. So here, here we can just see that
This is the N stage. It is the haplophage, and it is the diplophage. तो यहाँ जो हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं, तो इसमें ये हैप्लॉइड फेज है और ये डिप्लॉइड फेज है। और जैसा हम देख सकते हैं कि इस लाइफ साइकिल में जाइगोट जो है एम्ब्रियो पैदा करता है, और एम्ब्रियो जो वो स्पोरोफाइट को जन्म देता है। स्पोरोफाइट स्पोरोफिल्स बनाता है जो कि एस्ट्रोबिली के फॉर्म में होते हैं इन सिलेजनेला, और इसमें माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल्स आर देयर। माइक्रो स्पोरोफिल फिल एंड मेगा स्पोरोफिल। और ये जो स्पोरोफिल्स हैं तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मियोसिस होता है उनमें, और मियोसिस से दे जस्ट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, द फर्स्ट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं एंड दे जस्ट, और ये जो है ना, ये जो है वो रेस्पेक्टिव गैम्टोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्पोर मेल गैम्टोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गैम्टोफाइट। जब मेल गैम्टोफाइट जो है वो एंथ्रीडियम को बियर करता है, एंथ्रीडिया बियर करता है। फीमेल गैम्टोफाइट आर्किगोनिया बियर करता है। एंथ्रीडिया जो वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं जिनको हम एंथ्राजोइड्स कहते हैं। आर्किगोनिया जो वो ओवम का प्रोडक्शन करता है, ओवम कंटेन करता है। फाइनली सिंगामी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो वो स्पोरोफाइट को फिर जन्म देता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजनेला। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियो जस्ट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। So next question, let's see. In gymnosperm, pollination is exclusively by anemophily, hydrophily, zoophily, melcophily. The correct answer is anemophily. Anemophily is actually wind pollination. Anemophily is wind pollination. So wind pollination is the only pollination in gymnosperm. Wind is the only agency to just to facilitate pollination in gymnosperms. तो एनेमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन, और जिम्नोस्पर्म में से विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है। हाइड्रोफिली मींस pollination by the agency of water, which is absent in gymnosperm. Zoophily is the pollination with the agency of animals. It is absent in gymnosperm. Melicophily is the pollination with the help of snails, which is again absent in gymnosperm. तो हाइड्रोफिली का मतलब है कि वाटर के हेल्प से जो है पॉलिनेशन जो कि एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में। जूफिली का मतलब है कि एनिमल्स के हेल्प से पॉलिनेशन का होना, जो फिर एब्सेंट होता है इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। मेल्कोफिली का मतलब होता है कि स्नेल्स के थ्रू, वो स्नेल्स के थ्रू जो है वो मेल्कोफिली ये पॉलिनेशन होना, जो कि फिर जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होता है। तो सिर्फ विंड पॉलिनेशन होता है, हवा से जो है पॉलिनेशन होता है, एनेमोफिली होता है। तो दिस इज द आंसर। लेट्स नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's see here the two figures, and there are different options. So these are the two gymnosperms, and we can just see all the options just contain only the gymnosperms. So answer A. So A is Cycas and B is Pinus. This option itself is correct. The first option itself is correct. So we can just notice that it is a palm, just see the figure A. It is a palm-like structure with unbranched stem, and it just bears a crown of leaves upon it. So this these leaves are also compound leaves. Okay. So this is of course Cycas. It has got the rugged stem surface. We can just see here with the growth, with the subsequent growth marks, with the subsequent, you can say, scars left by the fall of the leaves. And here the pinus is there, which is marked by its conical shape, which is called the X-current shape. Okay, so it is quite naturally pinus with the branches of unlimited and limited growth. So this is the second. B is Pinus. So Cycas, we can just say that Cycas can be recognized
with the help of palm-like body, crown of pinnately compound leaves. And rugged stem surface with the scars of the fallen leaves. On the other hand, the pinus is marked by the excurrent shape, excurrent contour of the tree. Excurrent means cone-like shape of the tree, and branches of unlimited and limited growth. तो यहाँ पर जो फिगर जो हम देख रहे हैं, तो इसमें ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पाम अगर हम फिगर देखें तो इसमें पाम जैसा है, एक ताड़ जैसा जो स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर जो है वो लीव्स का एक क्राउन है जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं, और इसका जो स्टेम है वो काफ़ी रफ दिख रहा है। तो जो पहले से जो लीव्स हैं वो गिर रहे हैं, तो वो लीव्स हैं वो अपने निशान छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसका स्टेम काफ़ी रफ है। और जो सेकंड फिगर हम देख रहे हैं, तो सेकंड फिगर में जो वो एक कॉनिकल शेप जो है, कॉनिकल कंटूर जो दिखाई पड़ रहा है उस ट्री का, जिसको हम एक्स करंट शेप कहते हैं, ये पाइनस का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें जो है ब्रांचेस हैं, ये काफ़ी ब्रांच्ड है, और इसमें जो वो अनलिमिटेड और लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस में प्रेजेंट हैं। तो डेफिनेटली ये जो फिगर है ये पाइनस का है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। So now just let's now switch over to the next question, 132. It is which of the following has both the male and female cones on the same plant body? The options are cycas, pteris, eucalyptus, and pinus. Here the correct option is the pinus. Pinus is basically monoecious. Pinus is monoecious. Means to say both male and female, both male and female cones are present on the same plant. Now let's see the case of cycas. Cycas is dioecious, and it has got the male and female plants, and the male plant just bears the male cone, and the female plant bears the female cone. So the cones, male and female cones, are found separately on the different plants. Pteris is a fern, and it doesn't have the cone. It doesn't have the male and female cone. Okay. Eucalyptus is an angiosperm. It is a flowering plant. It also doesn't have you can say male and female cones. Rather, it has got the bisexual flowers. So pinus is the correct answer. तो यहाँ पर जो है ना, pinus एक सही आंसर है,
क्योंकि इसमें पाइनस जो है उसमें मेल और फीमेल जो कोन है तो वो एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। सेम प्लांट जो है उस पर मेल कोन भी आता है, फीमेल कोन भी आता है, ठीक है। साइकस जो है उनमें मेल और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, जिनको हम मेल प्लांट और फीमेल प्लांट कहते हैं। टेरिस जो है फर्न है, और फर्न्स में जो वो कोन्स नहीं पाए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी नहीं पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें कोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो पाइनस जो एक सही आंसर है। तो यहाँ पर लेट्स नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, which of the following is a living fossil? So jingo is the correct answer. Moss, Saccharomyces, Asparagora. So these are not just said to be the living fossil. तो यहाँ पर जिंगो is a gymnosperm with many primitive features despite being a conifer, लेकिन फिर भी इसमें जो है काफ़ी primitive features होते हैं। और ये एंडेमिक स्पीशीज है जो कि साउथ चाइना में पाया जाता है, जिंगो बाइलोबा, ठीक है इसका पूरा नाम। तो जिंगो जो है अपने primitive features की वजह से जो है वो living fossil कहा जाता है। Moss is a bryophyte. Moss is a pretty advanced bryophyte, so it is not said to be the living fossil. Saccharomyces is yeast, and it is also not a living fossil. It has got the modern features of fungi. And Asparagora is an alga. It is also an advanced green alga. So it is the jingo that is the correct answer. So it is due to the primitive features that the jingo is called the living fossil. तो living jingo जो है वो अपने प्रिमिटिव फीचर्स की वजह से जो है लिविंग फॉसिल के फॉर्म में जाना जाता है। मॉस जो वो एक ब्रायोफाइट है, सैक्रोमाइसिस जो ईस्ट है, और एस्पारोगेरा जो है एल्गा है। ये सभी तीनों जो है वो अपने ग्रुप में जो है वो एक एडवांस जो है वो स्ट्रक्चर वाले माने जाते हैं, लेकिन जिनको जो है अपने प्रिमिटिव फीचर्स की वजह से जो है ये इसको जो है हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 134. Cycas belongs to gymnosperms due to being living fossil, naked seed without fruit, vessels present in xylem, and habitat. The correct answer is the naked seed without fruit. Literally, gymnosperm means gymnosperm, a term given by Theophrastus. So gymnosperm literally means, gymno means naked, and sperm means seed. So these are the phenogames. These are phenogames. With no pistil and the ovules are naked. The ovules are naked. Since the ovules develop into the seed and the pistils, the ovary wall of the pistil just develops into the fruit. So due to absence of pistil, due to absence of ovary, the fruit development doesn't occur. And ovules which develop into the seeds are naked. So naked seed without fruit is the best answer. Even while Cycas is also known as living fossil along with Jingo, but this is not the reason for it to be belonging to the gymnosperms. Vessels are present in the xylem. Vessels are very common in angiosperms. They are actually absent in gymnosperms. And habitat-wise, habitat is a very general feature. Habitat-wise, they are found anywhere, but they are basically xerophytic in nature. So the best आंसर इज नेकेड सीड विदाउट फ्रूट। तो यहाँ पे चारों जो हम आंसर देख रहे हैं उनमें नेकेड सीड विदाउट फ्रूट वो सही आंसर है कि इनके जो सीड्स हैं वो अनकवर्ड होते हैं, इनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि साइकस में भी जो है प्रिमिटिव फीचर्स हैं वो भी फर्न की याद दिलाते हैं, इसलिए उनको भी जो है लिविंग फॉसिल कहा जाता है इस जिंगो के अलावा। लेकिन
फिर भी ये रीजन नहीं है उनके जो है जिम्नोस्पर्म के मेंबर होने का। उनके जाइलम में जो है वेसल एब्सेंट होता है, क्योंकि वेसल्स जो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं। हैबिटेट जो है वो एक बहुत जनरल फीचर है। वैसे सारे जो जिम्नोस्पर्म हो वो एंजियोफिटिक होते हैं, कम पानी में ही काम चलाते हैं। लेकिन ये जो आंसर है नेकेड सीड विदाउट फ्रूट, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे सही आंसर है। जिम्नोस्पर्म जो टर्म है जिसको थियोफ्रास्टस ने दिया था, इसका मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स में वो नेकेड हो, जिनके बीज नेकेड हो। ठीक है, तो ये फेंडोगैम्स हैं। क्वाइट नेचुरली इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, कॉन्स्पिक्यूअस हैं, नोटिसेबल हैं। ठीक है, कोन्स पाया जाता है इनमें। लेकिन इनमें जो है जो फीमेल स्ट्रक्चर है, तो उनमें जो वो पिस्टल जो है एब्सेंट है, और इसकी वजह से ओवरी वॉल एब्सेंट है, और ओव्यूल्स जो है वो नेकेड होते हैं। अब ये जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप करते हैं, लेकिन जो कि ओवरी वॉल जो वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए जो है साइकस जस्ट बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो साइकस जो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। तो अब हम लोग जो वो चलते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 135। तो एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हैप्लॉयड, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर जो है ये है हैप्लॉयड। सबसे पहले हम ये समझें कि ओव्यूल के अंदर, इनसाइड द ओव्यूल ऑफ द जिम्नोस्पर्म देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया इन द फीमेल गैम्टोफाइट। एक मेगास्पोर से फीमेल गैम्टोफाइट का डेवलपमेंट होता है, और जो फीमेल गैम्टोफाइट है उसमें आर्किगोनिया डेवलप करते हैं। और ये जो आर्किगोनिया वाला जो एरिया है, उसके नीचे का जो हिस्सा है फीमेल गैम्टोफाइट का, तो वो हैप्लॉयड होता है, और वो फूड को स्टोर कर लेता है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीड करता है, और वही जो है एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म are haploid the part of the female gametophyte and formed well before fertilization. Well before fertilization. तो यहाँ पर देखते हैं कि एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म में, तो वो जो है वो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर बनता है, तो उस गैमेटोफाइट का एक हिस्सा जो कि आर्किगोनियम बनाता है, उसके अलावा बचा हुआ जो हिस्सा होता है, तो उसी को हम एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होते हैं, तो फिर उनके जो एंडोस्पर्म है वो भी हैप्लॉयड होते हैं, और चूंकि उनमें फर्टिलाइजेशन का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, तो उनमें कोई डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन नहीं है। तो इस वजह से जो है जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है, तो वो हैप्लॉयड ही रह जाते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, और इसलिए वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Here I am just going to draw a figure in order to just elaborate my point. It is actually the ovule of the gymnosperm. It is the integument, just one integument, and it is the nucellar beak. It is the archegonial champ. It is the
The enthedial chamber is the archegonial chamber. And inside it there is a female gametophyte. So this is the upper region is the archegonial region, and the archegonia developed here with the ovum. And this rest part is the endosperm. So it is the female gametophyte. Gametophyte. These are archegonia. Archegonia. So this entire part is called the endosperm. It is the nucellus. It is a nucellar beak. And it is the archegonial chamber. It is the enthedial chamber. So that is the integument. Gymnosperms are monotegmic. So here we can just see. So this is the haploid endosperm. Okay. So let's now just conclude the video.